Hey, hi everyone. Thank you so much for joining in. We'll be starting with our session shortly. We'll just wait for a couple more minutes so that everyone else can also come in, and then we'll get started. Thank you so much for joining in. We'll just get started in the next 2 minutes. हे दोस्तों, वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। Hey, hi everyone. Hey, hi everyone. Good evening and welcome to today's session. Thank you so much everyone for joining in. If you're coming in here for the very first time, let me quickly give an introduction of what we are doing here. What is this session about? So this is a part of Apna's Community Exclusives. This is a series of webinars that we've been conducting for the past 2 months, and we are hosting regular sessions at 7 p.m. on weekdays and around 3 to 4 p.m. during the weekends. The main objective of these sessions is to help you grow in your career, help you find better jobs, upskill yourself. And we've been covering a wide range of topics in these sessions, starting from things like spoken English, interview preparation, how you can create your resume. We're also covering technical topics. And today's session is on one such technical topic. And we will be discussing about systems design. And to host this session, to give us a detailed idea about this concept, we have Manish here with us. Manish, thank you so much for joining in. It's a pleasure to have you. Manish is a software engineer at PayPal. And this is the second session that we are doing with Manish. She has already hosted one session on technical interviews. So this is a little bit more technical topic where we talk about system designs. We hope that you find this session valuable. If you have any questions, any doubts, please feel free to use the chat. We will also have Q&A sessions. We will give you an opportunity to ask questions directly. But while the session is going on, please feel free to ask these questions on chat, use the Q&A, and we'll take breaks every now and then to answer these questions. Over to you, Manish. Why don't you quickly introduce yourself and the session for the day? Yeah, thank you. Thank you, Deepanjan, for introducing me. So I'll also share my screen, and meanwhile, I'll also start talking. So let me know if you guys are able to see my screen first. Are you, Deepanjan? Sorry. Yeah, the screen is visible, Manish. Yeah. Oh, okay, that's great. So, yeah, so a little bit about myself, guys. So my name is Manish. I'm working in the IT industry for about 7 years as of now. I've worked with different set of companies, started my career in 2017 after I graduated. And then post that, I have worked with Mindtree and then Dell EMC, then Gartner. And currently I'm working at PayPal as a senior software engineer. So that is on a very high level about me. Today, I'm here to discuss on a very important and a beginner-friendly topic as well, which is how do you scale your system and take it from 0 to million. So probably if you are a fresher, there are terms in this session that you might have not heard of before. I'll try to keep it grounded and keep it in a way so that you guys are able to relate and understand things. So first thing I want to talk about is system design. So
whenever you start to work as a software engineer in the industry, you will get to work on some kind of a system. Either you will work for Amazon or Hotstar or any place, any company. So they have all the application. It has a architecture on how the things are working, and on top of that, you write build features, you write code, and do a lot of stuff. But how do you see like a college project? Probably in your final years, if you have done the engineering, you might have built some kind of a project, some website, some e-commerce APIs or something. But what will be the thought process when you're trying to scale it up so that that college project is not just a project, but it becomes a startup of yours? Okay, so what are the things that you will keep in mind when you are trying to scale that system? Like from your personal computer, you're trying to host it over there to a place where it is hosted and can serve millions of users. So, what is the journey that one has to think of? Is what I'm trying to give you guys an idea on this particular session. So, that is why this is scaling from 0 to million. Okay. So let's start our session in this one. So the first thing is, when we talk about scaling the application, is the term scalability. So what do you understand by this term scalability? So if we see just the Wikipedia definition, this is the property of a system to handle a growing amount of work. Okay, so what does that mean is ki, you have a system, probably a college project, but that is not capable to handle a millions of requests. Why? There can be different kind of bottlenecks. You don't have that kind of resources to support. Your system will go through the bottleneck and it will crash. Okay, so the idea is that the system can handle increased load without compromising on the performance. Okay, the performance, what does it mean? It means two things. One is the latency, that it should not be that you have clicked on a button and it takes 5 minutes, or it your entire system gets hanged up. Okay, so that is a severe performance issue which no one would like to interact with such a system. So imagine if you are doing a Google search and you press the enter button, and the page is continuously loading up and you don't get any response. The user will be frustrated. Probably we as a user have been in those situations. So if you open an app और उस ऐप पर कुछ डेटा नहीं आता, हम तुरंत उसको बंद कर देते हैं. We don't even feel कि कौन इस पे 5 सेकंड वेट करेगा. Right. So there are many such examples of application, like e-commerce applications. You can think of Amazon, Flipkart, social network, Facebook, Amazon, streaming services, and a lot more. BK time पे most of जो भी systems बने हुए, they are in place कि they are able to handle a wide variety of users. Scale कर सकते हैं depending upon the different situation you put the application in. ठीक है. So now let's start the journey. Okay. Let's go back to the college when you started building an application in your final year project. तो क्या था उस टाइम पे? You just had one laptop, एक machine है. ठीक है, इसी machine पे you have your front end as well, you have your back end as well, and database भी उधर ही, you are probably running a MySQL instance over there. So what is happening over there is कि the same laptop which you have, you just took your laptop and went to the professor and showed him ki, hey, see, this is the kind of a React application that you might have built, and then the backend is in the Spring Boot, and then you have a database instance of SQL. So everything is there in just this one box, one server. That is it. So here in this particular single server, you are trying to handle the application logic as well as the database. So probably your friend from his laptop will try to hit your server and try to see how the response is. So there will be a client here. Probably you will hit from your friend's laptop to the IP of this machine, and you will see the response is coming, the website is loading up, and everything is proper. Okay, so here the thing is, this single server is when it is able to do both the application logic and the database. There are so many issues that can happen. Okay, so this is one of the things. So we can say that if in the first place your laptop on which the entire application is up and running
अगर तुमने लैपटॉप बंद कर दिया तो फिर तो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट, nobody will be able to access, right? So this is something which is like a single point of failure which we say, okay, because we have the entire thing on just one machine. That's the issue. Now let's understand what happens when you click on a URL. Okay, probably you have a college project, something abcd.com. So what happens when you hit the abcd.com? You will probably need to buy this domain. Okay, but this machine that is that where your project is hosted, okay, the internet does not know that abcd.com means you have to go and hit this machine. This machine has a IP, probably 10.20.30.40 or anything, like in general you have 192 dot something dot something. So how does you know? Because if you will try, probably you will try to log in or hit Google, you can do something, I think 0.0 or 8.8, something like that. Some IP is there, which you will hit, then it will redirect you to the google.com. But for all the different websites, it's impossible that you remember all the IP, because we as a human are good with the characters. We can remember the names of the website rather than I'll tell you to remember the names of different IPs. So there is this entity which is the DNS, domain name server. So this DNS contains the mapping of all the website name to its IP. So consider they have a kind of a dictionary where they have this mapping built in. So whenever you ask for, hey, what is the IP of abcd.com? So basically you don't do it, your browser do it in the backend. So when you open your Chrome browser and you type abcd.com, your Chrome browser will go and ask for ask with DNS, hey, what is the IP of this particular abcd.com, and it will return you something. So that is what I'm trying to explain you in this particular segment, and every time it happens. But what is the thing? So you will say, every time when I will do google.com or abcd.com, it will go and it will hit this DNS server and it will give me the IP. So no, that's not the case. Your browser, once only it will go and fetch this IP. From the next time, if you are again trying to hit abcd.com, it will pick up from the browser cache. So there are different levels of cache that is also maintained when you try to hit the DNS. So if it will not be in your browser, it will go and check at your OS. If it's not there, it will go and check with your router. Then it will go and check with your ISP and so on. So this is just to ensure that the DNS does not get a lot of load, because every time a new request comes and you will go and find it over here, DNS will be in trouble. So that is the overall perspective. But now let's focus on the core thing which we are trying to discuss: how to scale our application. So how to scale this college project that we have. Okay, so now at the first scenario, the app server and the database is in the one laptop which you have. Okay, and as a result, whenever you will shut down your laptop, so entire project जो है बंद हो गया. ठीक है, probably database भी, if you have stopped or anything happens, everything has to be started from the scratch. What does it mean? It means कि single point of failure है. We cannot rely on this if we want to scale it up. ठीक है, or what is the other issue over here? ये resources limited है हमारे पास. Probably one laptop that you will have, it will be 500 GB or 1 terabyte hard disk. इतना कर सकते हो. RAM के condition में भी you will have like 4 GB RAM or 2 GB RAM, or if you have a bigger बहुत अच्छा machine है तो 16 GB RAM something. But beyond that, what? 16 GB RAM के ऊपर तो you will not be able to justify, right? So what happens agar your traffic becomes to increase? Probably you made a very cool project in your college and that becomes a hit. Something like जैसे Mark Zuckerberg ने build किया था Facebook at his college days, and it became a real hit, and then everybody wants to use that application. So if multiple users start to come on this application of yours, how you will be able to serve all of them? Probably everybody will create their profile and they will, all the data has to be stored in your database. Okay, which probably if you are using a SQL or any such database, it does not matter. There is a capacity in your laptop as well, in where you can store all this information. Okay, if there are 100 requests, probably it will serve, but there are 1,000 requests or 1 million requests starts to hit,
your server, your laptop will not be able to handle all of that and it will go down. बस खत्म business यहीं पे, कैसे बनेंगे मार्क जकरबर्ग? तो ये ऐसे नहीं चलेगा. So what you will do, you will say कि okay, I have just one laptop and इसी में I was having my app server as well as the database. So if my request is a lot of request is coming, so let's be smart. I'll partner with my friend, ठीक है, and I'll say कि चलो let's split it up. कि एटलीस्ट स्टोरेज बढ़ा लेते हैं. सो आई पुट डेटाबेस इन माय फ्रेंड्स लैपटॉप एंड द कोर लॉजिक I'll put it in my system, and that's how I have not two machines. Now the first app server will talk to the database, and then how I will fetch the result and serve to the user. So that is the first thing that we can do. We can separate out the database. Okay, now how the picture looks like is, we have the client. The client will go to the DNS, will get the IP. Now this is the IP of my this app server. So when the request is made, now I have split it. The app server is split, the database server is split. So now the app server, what you hear in general, is called the mid tier. Okay, and the DB server is also known as the data tier, and this is the client layer, the UI, where the user generally interacts with the any of the application. Okay, so now things are going good. Now what you have done, you have utilized your friend's laptop, or you have got a new machine, probably a new server, and there you are hosting your database. And now you feel ki ha, now my this startup will be able to sustain for more few months, because now I am able to handle some more amount of request because of dedicating the resources. I have dedicated app server resources, I have dedicated the DB resources. So what has happened? Improved performance. The performance will improve because now your app server, earlier you had everything in just one machine, but the RAM is limited, right? Whenever you are trying to do, if you are running the DB as well there, it will hamper or it will occupy some space in your RAM as well. Now, when you have dedicated machines, now this laptop is only and only able to focus on the core logic of the system. And the other one has just to worry about the DB part. So first thing, improve performance because we have dedicated resources now. And then better maintenance and the management. Now, if any of the issue you understand ki, acha, there is some issue with the database, probably the data is corrupt or anything. Now you don't have to debug in the entire machine ki yahan bhi dekho, yahan bhi dekho. You know, there is a data issue. I can directly go to this database DB tier and I can check what is the issue over there. If there is a logic issue, you feel कि logic का कुछ issue है या फिर code में कुछ error है, कुछ exceptions आ रहे हैं, anything, any bug you have identified, you don't have to go and look into the entire system. You will just go to the app server layer ki ha, okay, probably here is my code running and I'll have to look and fix my whatever the bug is over here. Okay, now what is the issue again? Again, I have said single point of failure. Why? Because again, I have just one DB, I have just one server. Probably if something happens to my this machine, so entire startup got shut down in just one go. Okay, अगर DB इस लैपटॉप में कुछ हो गया, DB क्रैश तो सारा डेटा चला गया यूजर का, अगेन सारा स्टार्टअप जो है बनाया था सब खत्म, स्केल नहीं कर पाए. सो दिस इज द इशू. ठीक है, द रियल टाइम एप्लीकेशंस या जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस है that cannot be run on this particular model. ठीक है, because we are seeing that single point of failure से हमारा आगे scaling possible नहीं है. That is the first thing. Again, what happens if the traffic is again increasing, more number of traffic, और भी लोग आ रहे हैं, we have scaled definitely, लेकिन हर मशीन का एक तो कुछ threshold होता ही है. ठीक है कि this particular app server or this particular laptop of yours will be able to handle probably 10,000 requests per minute or something like that. But what happens, उससे ज़्यादा request आने लगे, this will not be able to serve. ठीक है, and if this will not be able to serve, तो ये choke हो जाएगा ये machine and it will go down. So again, there is a issue how to handle more amount of traffic. We are talking about how to scale from 0 to million, right? So what next? What can we do more? So before we go and understand about the scaling concepts, I want you to understand the vertical scaling.
ठीक है. और इवन you can understand vertical scaling in such a way, जैसे probably इधर what we saw the issue was कि हमारे पास resources कम है. हमारे पास 1 TB का लैपटॉप था with 1 TB as the hard disk and 8 GB as the RAM. This was something which we had. लेकिन इससे काम नहीं बन पा रहा. So what we will try to do? Probably you will go and say कि एक काम करते हैं, 1 TB से नहीं काम बन रहा, I'll get a bigger laptop. ठीक है, I'll get a laptop of 2 TB. So हमने 1 TB की जगह जो है 2 TB का खरीद लिया एंड उसके अंदर 16 के जगह हमने 32 GB का रैम ले लिया. तो यू विल से हाँ ये काम कर जाएगा ना, डेफिनेटली इट विल वर्क, डेफिनेटली ये काम कर जाएगा. Why? Because जो इशू था कि रिसोर्सेस हमारे कम पड़ रहे हैं, नाउ यू हैव इंक्रीज द रिसोर्सेस, नाउ यू हैव गॉट अ बिगर मशीन. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच वी कॉल वर्टिकल स्केलिंग. वर्टिकल स्केलिंग मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू स्केल like this vertically. So अगर पहले you had this big of a machine, you went and got a bigger machine जिसमें ज्यादा रिसोर्सेस हो, ज्यादा कैपेसिटी हो, बड़ा डीबी का ले लिया तुमने. ठीक है. सो दैट योर स्टोरेज वाज फर्स्ट 1 TB, नाउ यू गॉट अ 10 TB or a 2 TB. If your app server was could handle only 16 GB, then you went ahead and got a 32 GB वाला. So यहाँ पे काम तो बन जाएगा. What is the issue then? तो इशू यहाँ पर क्या है? जस्ट गो एंड सी कि शुरू में जब एक लैपटॉप लिया था, ठीक है, यू वुड हैव गॉट इट फॉर 2 GB रैम, फिर 4 GB रैम आ गया, फिर 8 GB रैम आ गया, 16 GB आ गया. एंड ऑल्सो जैसे जैसे ये मशीन अपग्रेड की ना, यू विल सी कि प्राइसेस बढ़ रहे थे. और 16 GB 32 GB जैसे मशीन, अगर पावरफुल मशीन, इफ यू विल गो एंड बाय समथिंग मैकबुक प्रो मैक्स और समथिंग लाइक दैट, यू विल सी कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है. इट विल कॉस्ट यू 3 lakhs. ठीक है. बट उसमें भी एक चैलेंज है. एक तो महंगा तो है ही, इट्स रियली कॉस्टली. सो एक टाइम के बाद तो यू कांट अफोर्ड इट. दूसरी चीज क्या है कि उसका भी थ्रेशोल्ड आ जाता है. प्रोबब्ली यू विल गो अहेड एंड गेट अ 64 GB रैम, फिर उसके ऊपर का 128 GB रैम. लेकिन एक थ्रेशोल्ड आएगा, बिकॉज दैट्स अ मशीन, यू कैन नॉट टेक इट बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड. अब क्वांटम कंप्यूटर तो लेके नहीं आओगे, राइट? एंड क्वांटम कंप्यूटर इज वेरी कॉस्टली, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि यू विल बी एबल टू गेट इट. ठीक है. सो these are the problems with this kind of a scaling. Okay. At a certain level, definitely companies and folks do prefer vertical scaling, but in a long run, okay, when we have to scale it for so many millions of users, then this particular strategy has a threshold. इसके बाद नहीं हो सकता. So now that is the few of the things which I am talking about here. कि again more cost. ठीक है. Server size cannot be scaled beyond. एक टाइम के बाद नहीं कर सकते हैं. तीसरा again single point of failure. Why? Because again एक ही तो मशीन है, एक ही तो लैपटॉप है अपने पास. अगर again the same scenario, ये लैपटॉप को अगर कुछ भी होता है, बंद हो जाता है, खत्म सारी चीजें. अब इसके आगे क्या करेंगे? ठीक है. So again this could not be done well. ठीक है. Vertical, but you understand the concept vertical scaling. ठीक है. That is something which you should know. So that is the same journey which I'm trying to say कि देखो client है, ठीक है, client एक request करेगा, request जाएगा तुम्हारे app server को, app server request करेगा database को, database फिर respond back करेगा app server को, app server respond करेगा client को. This is the journey. बट यहाँ पे प्रोज भी है. ऐसा नहीं कि कौन सी है सिर्फ कि एक बड़ा मशीन ले लिया या सिंगल मशीन है तो दिक्कत है. प्रो ये क्या ना कि एक ही मशीन है तुम्हारे पास, एक ही मशीन को मेंटेन करना है. 10 मशीन ले आओगे, अब 10 मशीन को देखोगे, है ना. इफ यू विल बाय मोर मशीन्स, लाइक यू हैव 10 मशीन्स टू सी, अब 10 मशीन को मॉनिटर करना पड़ेगा. 10 सर्वर्स यू हैव टू चेक कि अच्छा यहाँ पे इशू है, ये बग आ गया, यू हैव टू फिक्स दिस, और यू हैव टू डिप्लॉय टू मल्टीपल मशीन्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. बट ठीक है, दिस इज नॉट सच ऑफ अ बिग ऑफ अ प्रो व्हेन वी आर लुकिंग फॉर कि मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करना है, व्हेन वी आर प्लानिंग टू बिग समथिंग रियली बिग. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. बेटर क्या कर सकते हैं? सो द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग समझते हैं कैसे. सो पहले तुमने क्या किया, यू वेंट अहेड एंड बॉट एक बड़ा लैपटॉप. ठीक है, एक मैकबुक प्रो मैक्स लेके आए थे तुम, 32 64 GB कॉन्फ़िगरेशन का. लेकिन तुम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि
rather than buying a 32 GB का बड़ा वाला MacBook Pro Max जो 3 लाख कॉस्ट करता है, what you can do is you can go and buy सस्ता लैपटॉप probably of जो कि 1 TB का था, you can get that laptop in 50-60 हजार and you can buy those 10 laptops. ये भी कर सकते हो and then you have not 10 machines and that will cater to the same kind of load क्योंकि resources तो बढ़ ही गए ना and that you have done it probably सस्ते तरीके से. So this is something which is called horizontal scaling. अब horizontal scaling का क्या मतलब है कि क्लाइंट थे, ठीक है, अब तुम्हारे पास लोड बढ़ रहा है, रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सो मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स. नाउ मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स को सर्व करना है, हमको क्या चाहिए, मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेस. तो हमने एक बड़ा मशीन लेने की जगह हमने क्या किया, वी वेंट अहेड एंड वेंट फॉर कि 5 लैपटॉप लेके आ जाते हैं, आई गो एंड गेट मोर नंबर ऑफ सर्वर्स. ठीक है, so now my clients can go and talk to any of these servers and I will respond. but issue क्या है यहाँ पर कि इन 5 सर्वर में क्लाइंट को क्या पता, कस्टमर जो है, हाउ विल इट नो कि मुझे कौन से सर्वर से जाके बात करनी है, क्या मैं इसमें बात करूं, मैं इस पे कांटेक्ट करूं, इसमें करूं, कौन बताएगा ये. सो एक मैनेजर चाहिए, एक बंदा चाहिए बीच में जो ये काम हैंडल करे. उसका बस यही काम है कि रिक्वेस्ट आया, बोलेगा तुम जाओ ऐप सर्वर 1 पे, ये रिक्वेस्ट आया, गो टू ऐप सर्वर 5. So now just to handle this part, where to send the request, we need one more computer, we need one more laptop. Okay, so now we will go ahead and try to bring one more laptop and this laptop will do balancing of the load. So whatever the request come, this guy, this middleman will try to redirect it to the current to the app server which can serve this particular request. Now this particular middleman, इसको बोलते हैं load balancer. So load balancer, as the name suggests, balancing the load, balancing the traffic, distribution the traffic. ठीक है, इसका बस यही काम है. So now ऐसे समझते हैं कि अब हमारे पास अगर 1 2 3 4 5 6 क्लाइंट्स हैं और ये 6 क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करने लग जाएंगे, सो रादर देन these guys talking to our main servers, these guys will talk to this middleman जो कि हमारा load balancer है. And now this load balancer, इसका काम होगा कि अच्छा ये रिक्वेस्ट इसके पास आई, इसको इधर भेज दो, ये वाली रिक्वेस्ट इसके पास आई, इसको इधर भेज दो. And that's how the entire balancing is done. अब यू विल से कि यार ये लोड बैलेंसर को कैसे पता कि किसको रिक्वेस्ट भेजना है, शुड आई सेंड इट टू द ऐप सर्वर 1 या 2 या 3 या 4, किधर भेजें, हाउ विल दिस गाय नो. So which is a good point कि इसको कैसे पता. So for that we have different algorithms load balancing के लिए भी, round robin, weighted round robin and multiple other, so that you can explore sometimes. ठीक है, कि how this load balancer is able to figure out and send the route the request to the particular app server. अब एक तो ये फायदा हो गया, दूसरा क्या फायदा है, अर्लियर हम क्या कर रहे थे कि we were trying to get the IP from the DNS of the app server, डायरेक्ट ऐप सर्वर का ही आईपी लेकर के उस पे हिट कर रहे थे. लेकिन अब ऐसा करना पड़ेगा क्या, because you are not talking to the app server directly, so you don't need to have the IP of the app server. Rather than तुमको क्या चाहिए, you need the IP of this guy, load balancer. So इसका फायदा क्या हुआ कि जो तुम्हारे मेन सर्वर्स थे उनकी आईपीज यू डोंट हैव टू मेक इट पब्लिक, अब वो प्राइवेट आईपीज हो जाएंगे. सो सिक्योरिटी का भी फायदा हो गया कि अब ये प्राइवेट आईपीज हैं, दीज आर नॉट एक्सपोज्ड आउटसाइड, तो कोई भी डायरेक्टली तुम्हारे ऐप सर्वर्स पे हिट नहीं कर सकता है, हैक नहीं कर सकता है. एनी बैड थिंग वोंट हैपन टू योर ऐप सर्वर, कुछ भी होगा तो पीपल विल अटैक ऑन दिस लोड बैलेंसर फर्स्ट. एंड नाउअडेज द लोड बैलेंसर इज प्रीटी स्मार्ट, उसमें बहुत सारी और फीचर्स भी हैं, रेट लिमिटिंग एंड ऑल द थिंग्स आर सपोर्टेड. सो this will take all the hit and your main app servers will not. Okay, so now this is also the point, the client will connect to the IP of load balancer and all the app servers will have the private IPs and it won't be exposed. ठीक है, so now what happens, इससे फायदा क्या हुआ कि easy to scale. ठीक है, अब अगर कल को
और ट्रैफिक बढ़ जाता है, ठीक है, और नंबर ऑफ यूजर्स आ गए हमारे पास एंड और सारा रिक्वेस्ट आने लगा एंड यू फील कि दीज 4 ऐप सर्वर्स भी कम पड़ रहे हैं, इतने से भी काम नहीं चलेगा. सो व्हाट नेक्स्ट? यू विल से कि ठीक है, आई विल गो एंड बाय वन मोर लैपटॉप, आई विल ऐड वन मोर ऐप सर्वर and I'll tell this load balancer कि hey, now I have one more new app server, just point the request to this guy also. खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है. The more number of requests, just add one more machine, two more machine, three more machine, and tell the load balancer कि okay, try to hit over here, and it is done. Easy to scale. ऐसा नहीं है कि पूरा मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा बड़े मशीन में. Like earlier the issue was कि अगर you will buy a bigger machine, तो सारा शिफ्ट भी तो करना पड़ता ना तुम्हें. कि earlier you just had one laptop 8 GB रैम का and then you got 32 GB रैम. अब उस पे एप्लीकेशन चलाना है तो पहले सब कुछ माइग्रेट करो, टेक ऑल द डेटाबेस जो भी वहां पे लिखा किया हुआ था एंट्री, उसको उधर जाके डालो, ब्रिंग द एप्लीकेशन ओवर देयर एंड रन ओवर देयर एंड देन स्टार्ट टू सर्व. यहाँ पर अब ये चीज का टेंशन ही नहीं. All you can do is just bring a new sub server and connect it with the load balancer and it's done, taken care. So this also improves your availability. What do I mean by availability? कि earlier जो वो डाउन टाइम होता ना to take the data from this particular smaller machine and bring it to the other machine, तो वो But 1 घंटा 2 घंटा जो इट विल टेक यू कि यहाँ से डेटा शिफ्ट कर रहे हैं उस नए मशीन पे, तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस 1 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए योर सिस्टम विल बी अनअवेलेबल. उस टाइम पे इफ एनी यूजर विल कम एंड ट्राई टू कनेक्ट टू योर सिस्टम, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं. एंड दैट इज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. जस्ट इमेजिन अगर यूट्यूब ये काम कर रहा हो या इंस्टाग्राम ये काम कर रहा हो एंड यू आर ट्राइंग टू ओपन इंस्टाग्राम और वो ओपन ही नहीं हो. सो इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस कि यार इंस्टाग्राम नहीं चल रहा. सो इट्स बेटर कि समथिंग एल्स होना चाहिए, ठीक है. सो इट इंप्रूव्स योर अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एज. ठीक है. नाउ लेट्स सी अब क्या कर सकते हैं इसमें और बेटर क्या कर सकते हैं. स्टिल मैं देख रहा हूं कि डीबी तो एक ही है, हमने ऐप सर्विस को तो चलो बढ़ा दिया बट एक ही डीबी है. अगेन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. अगर इस डीबी को कुछ हो गया, एनीथिंग इफ इट हैपेंस टू दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, फिर से खत्म. You can't do anything. Sorry, load balancing and introducing the app servers again does not make any sense. So we'll have to look into this as well. अब यहाँ पर पहले तो हम कुछ let's go to database को हम कैसे scale कर सकते हैं. So there is a thing which is called as a database replication. अब इसका क्या मतलब है? Earlier what we did, we tried to scale the app servers. कि हमने इंट्रोड्यूस किया था एक लोड बैलेंसर, हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स थे, ये मल्टीपल क्लाइंट्स क्या करते थे, हमारे लोड बैलेंसर को हिट करते थे. एंड दिस स्मार्ट गाय, दिस स्मार्ट लोड बैलेंसर, इसको पता था कि अच्छा ये वाली रिक्वेस्ट मुझे इस पर्टिकुलर ऐप सर्वर को सेंड करनी है और ये कर देता था एंड थिंग्स वेर गुड. बट इशू क्या हो रहा था हमारे साथ, हमारे पास डेटाबेस बस एक ही था, सिर्फ एक डेटाबेस था. एंड उसके कारण हमने देखा कि अगर ये डेटाबेस को कुछ भी होता तो हमारा पूरा इंटायर एप्लीकेशन जो है तुरंत में गिर जाता. अब इस चीज को हमको फिक्स करनी थी. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस रेप्लिकेट कर दो. व्हाई ओनली टू हैव वन लैपटॉप विथ योर टेबल? डेटा तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम 3-4 लैपटॉप ले आएंगे, सब में सेम डेटाबेस डाल देंगे, सब में सेम चीज रेप्लिकेट कर देंगे कि अच्छा इसमें अगर 100 यूजर्स हैं तो लैपटॉप नंबर 2 में भी ये 100 यूजर्स का हम प्रोफाइल बना के सेव कर रहे हैं. अब इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो है रेप्लिकेशन होने के कारण अगर इनकेस एक डेटाबेस खराब हो जाता है या लैपटॉप बंद हो जाता है, हमारा पूरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा बिकॉज वी हैव 3 अदर मशीन्स टू सपोर्ट इट. ठीक है. सो नाउ when we try to do such a case कि जहां पर हमको रेप्लिकेशन करना होता है, so there is a concept of master slave architecture. Okay, now what is this master slave architecture? कि there will be one database that will accept the new changes. कि कुछ भी इंसर्शन हो रहा है, कुछ भी राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो अब हर डेटाबेस में नहीं कर सकते ना. प्रोबेबली इफ यू विल से कि मेरे पास 3 डेटाबेस है एंड देन एक बार राइट इस पे कर दिया, दूसरी बार सेकंड नंबर पे कर दिया, तीसरी बार थर्ड पे कर दिया, हाउ विल एवरीबॉडी बी इन सिंक? क्योंकि फिर अगली बार जब रिक्वेस्ट आएगा, हाउ टू गेट इट जब तक वो सिंक नहीं हुआ है. सो
How it is done is कि there will be one master DB and there will be couple of slaves DB, and master DB जो होगा, master guy will accept all the write operations कि कुछ नया insertion हुआ, anything नई entry हो रही है to the system. So this master DB will take everything with itself. एंड अगर रीड ऑपरेशन आ रहा है कि तुमने ओपन किया वेबसाइट एंड यू वांट टू सी योर प्रोफाइल, तो एक गेट रिक्वेस्ट है ना, ऑल द रीड ऑपरेशन विच इज देयर, all of the read operations are being served by the slave DBs कि ये slaves हैं, इनसे तुम करा लो, एंड इन दोनों के बीच में एक बना हुआ रहता है, in between these two, master and slave, there is continuous replication that happens every time. So it is ki never it will happen that the master and the slave are out of sync. That is the first thing. Also, अब you will say कि what happens कि अगर यहाँ पर one of the DB dies, कि अगर मान लो we have 3 slave DB and one slave DB dies. So again, there is no any issues. Why? Because backup में 2 और तो है. Any of these slave DB will be able to handle the other set of requests. Easy. But the other question होगा कि अगर what happens कि अगर master ही मर जाए, तो फिर ये write operation कौन consider करेगा? What happens if the master die? So if this master will die, what will happen is any of the slave, चाहे this or this, will try to replace master उस point of time पे कि अच्छा मास्टर अगर नहीं है तो क्विकली इन तीनों के अंदर, क्योंकि ऑल ऑफ द 3 वेर इन सिंक विथ मास्टर, सो एवरीबडी हैज द सेम डेटा, तो कोई एक को these guys will elect as a master and that will replace this master DB. अब ये इलेक्शन कैसे होता है, तो इनका भी एक एल्गोरिदम है. So if you will want to read about it, तो इसके लिए इलेक्शन एल्गोरिदम्स होते हैं. ठीक है, लीडर इलेक्शन एल्गोरिदम, राफ्ट है, पैक्सॉस है, these are again complex algorithms, so I'm not covering it यहाँ पर. If you are interested, so go ahead and explore these things. So these are again the next set of cool things जो you will get to know once you you know progress in your career and जब real time इन चीजों पे काम करते हो तो. ठीक है, so अभी के लिए when we have master DB, we have slave DB, and हमने अपना बैलेंसिंग भी कर दिया है. ठीक है, अब मेरे पास मल्टीपल ऐप सर्वर नोड्स थे, हमने लोड बैलेंसिंग भी कर दी, तो हमारा एप्लीकेशन सेट है, बढ़िया चल रहा है. ऑल द रिक्वेस्ट आर बीइंग रेस्पॉन्डेड बहुत अच्छे तरीके से, डाउन टाइम भी नहीं है. अब क्या कर सकते हैं? प्रोबेबली अभी तो सब कुछ चल रहा है, तो मतलब थिंग्स आर वर्किंग. तो अभी अब काम करते हैं हाउ वी कैन मेक आवर एप्लीकेशन मोर एफिशिएंट. कि अगर एक बटन को क्लिक करने पर रेस्पॉन्स अगर मान लो 500 मिली सेकेंड्स में आ रहा था, हाउ कैन वी मेक इट इवन बेटर. ठीक है, कि हर बार हमको अच्छा रेस्पॉन्स मिले. हाउ कैन वी ब्रिंग इट डाउन टू 5 मिली सेकेंड्स. क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट आ रहा है, वी आर गोइंग टू द ऐप सर्वर जा करके फिर डेटाबेस को कॉल करता है, डेटाबेस रेस्पॉन्ड करता है, एंड देन ऐप सर्वर रेस्पॉन्ड करता है, एंड देन इट गोज टू द क्लाइंट. किसी तरीके से क्या हम रेस्पॉन्स टाइम बचा सकते हैं क्या? सो फॉर दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैशिंग, कि कैश करते हैं डेटा. व्हाट डज इट मीन? कि डेटाबेस पे जाओ ही मत. ठीक है, डेटाबेस कॉल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, डेटाबेस कॉल्स रियली एक्सपेंसिव होते हैं, वो नेटवर्क कॉल्स होते हैं. सो you will hit the make us, probably you are doing a select star from database where some condition is this and this. अब वो database में जाता है, वो पूरा scan करता है, and then you get all those rows, फिर it comes back to your service layer जो mid tier था, and वहां से फिर वो process होकर के you have some logic and things, and then you serve it to the client. अगर मैं इधर का जो ये पूरा पार्ट है इसको skip ही कर दूं, तो थोड़ा तो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो ही जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशिंग, कि बीच में एक लेयर ले आओ. ठीक है, इंट्रोड्यूस अ कैश इन द बिटवीन, इन द ऐप सर्वर लेयर पे ही, कि when the request comes to load balancer sets it to the app server. Now app server will first go and check with the cache कि कैश के पास डेटा है या नहीं है. If the cache has the data, that means it is a hit. And if there is a hit,
तो वो यहीं से इसको रेस्पॉन्ड कर देगा एंड इट विल बी सर्व्ड टू द क्लाइंट. सो नाउ तुमने क्या किया, यू हैव सेव्ड द डीबी कॉल्स विच वेर कॉस्टली ऑपरेशंस. बट व्हाट हैपेंस कि अगर कैश में नहीं है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मिस सिनेरियो कि कैश मिस हुआ है. एंड अगर कैश मिस होता है तब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा डीबी के पास. देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. सो देन यू विल गो अहेड एंड हिट द डीबी एंड अगेन सेम तरीके से डीबी विल रिस्पॉन्ड बैक टू द ऐप सर्वर. एंड नाउ इन दिस प्रोसेस जब डीबी से रेस्पॉन्स आएगा तो ये रेस्पॉन्स जाके कैश में अपडेट हो जाएगा कि अच्छा अब तो मेरे को पता है ना इस रिक्वेस्ट का क्या रेस्पॉन्स देना है, तो क्या पता अगली बार फिर से यही रिक्वेस्ट आए. तो मैं अगली बार डेटाबेस में जाऊंगा ही नहीं, मैं फिर यहीं से कैश से ही रिस्पॉन्ड करके क्लाइंट को भेज दूंगा. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कैश. बट यहाँ पे फिर हो जाता है कि कैश क्या होता है जनरली. इट्स अ रैम, कि रैम में तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है. ठीक है. सो वेन एवर यू वर्क विथ रैम इट इज वेरी फास्ट. ठीक है, की वैल्यू काइंड ऑफ रहता है. लेकिन क्या तुम हर चीज फिर कैश में नहीं रख लोगे, तो नहीं, यू कैन नॉट डू दैट क्योंकि कैश अगेन रैम इज एक्सपेंसिव. ठीक है. एंड क्या पता फिर यू विल से कि वी विल स्टोर एवरीथिंग फॉर एवर इन द कैश. so that is also not possible क्योंकि अपडेट्स हो रहे होंगे. देयर विल बी सम न्यू थिंग दैट हैज हैपेंड इन योर डीबी एंड फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा. सो एवरी कैश हैज अ टीटीएल व्हिच इज कॉल्ड टाइम टू लिव, कि एक दिन के लिए this will be stored over there या एक हफ्ते के लिए it will be stored over here. It depends on the different kind of system. ठीक है, किसी सिस्टम में it will be there for 1 day, किसी सिस्टम में it will be there for 1 week or whatever the use case is. So depends upon that. Now अब यहाँ पर भी वी आर गुड कि ठीक है हमने कैश डाल दिया. नाउ आवर एप्लीकेशन इज रियली फास्ट. अब और क्या कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे आता है इशू कि व्हाट अगर हमारे पास ग्लोबल यूजर्स हो जाते हैं. ठीक है, प्रोबेबली अब तुम्हारा जो कॉलेज प्रोजेक्ट था वो बढ़िया स्टार्टअप बन गया है एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट कि बस मैं इंडिया में नहीं करूंगा, आई विल इवन गो फॉर अदर कंट्रीज कि यूएस में भी मुझे सर्व करने हैं अपने क्लाइंट्स को. सो हाउ यू विल हैपन दैट. अब यहाँ पर तुमने तो अपने सारे मशीन इंडिया में लगा रखे हैं. अब तुम्हारा एक क्लाइंट है मान लो यूएसए में. सो अब वो यूएसए से एक रिक्वेस्ट आएगी तुम्हारे इस बॉक्स पर इंडिया में. ठीक है, एंड फिर वो यहां से तुम रेस्पॉन्ड करोगे उसको. नाउ ग्लोबल यूजर्स के केस में अब इस प्रोबेबली इस पूरे रेस्पॉन्स को होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. जो यूजर इंडिया में यहां पर ही था और यहां से रिक्वेस्ट करके उसको रेस्पॉन्स मिल रहा था, इट विल बी वेरी फास्ट. कंपैरेटिवली जो रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स यहां जा रहा है ये तो स्लो हो गया. तो ये यूजर तो बोलेगा कि यार तुम्हारा एप्लीकेशन बहुत खराब है, मैं क्लिक करता हूँ फिर 2 मिनट बाद मेरे को रेस्पॉन्स आता है, आई डोंट वांट टू यूज योर ऐप. नहीं चलेगा ना. सो रेस्पॉन्स टाइम क्योंकि डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन. सब क्या कर सकते हैं इसके लिए, व्हाट कुड बी डन. सो यहाँ पर बोलते हैं कि वी विल इंट्रोड्यूस something which is called a content delivery network. So imagine everybody watches Netflix over here, right? कुछ तो देखा ही होगा. So Netflix पे अब अगर मान लो there is a popular series something which went live, मनी हाइस्ट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सो अब मनी हाइस्ट सारे यूजर्स जो है बैंगलोर के दे आर वाचिंग कि मनी हाइस्ट ट्रेंडिंग है इंडिया में, एवरीबडी इज वाचिंग देयर. सो हर बार इंडिया का यूजर जाए और यूएसए का जो नेटफ्लिक्स प्रोबेबली सर्वर होगा वहां हिट कर रहा है एंड वहां से रेस्पॉन्स आ रहा है एंड दिस इज हैपनिंग एवरी टाइम. सो डिले सब एक्सपीरियंस करेंगे, दे विल से कि हाँ नेटफ्लिक्स इज नॉट दैट गुड, बहुत स्लो है, रेस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है. सो व्हाट नेटफ्लिक्स डज इज वो बोलते हैं कि क्यों नहीं मैं अपना एंटायर जो मनी हाइस्ट जो भी ट्रेंडिंग सीरीज है उसको इंडिया में ही भेज दूं, यहीं पर एक मशीन लगा देते हैं और इसी के अंदर माय एंटायर मनी हाइस्ट सीरीज विल बी रनिंग. सो अब इंडिया के जो भी यूजर्स मनी हाइस्ट के लिए सर्च करेंगे या रेस्पॉन्स करेंगे, दे विल जस्ट हिट द नियरेस्ट बॉक्स विच इज देयर इन इंडिया और उनको एक अच्छा रेस्पॉन्स टाइम में मिल जाएगा. दिस इज समथिंग विच इज CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. मतलब ऐसे there are different companies like Akamai which does provide CDN. So CDN servers are more like जो static content store करके रखते हैं. Now what is static content? Images हो गए, videos हो गए, HTML हो गया, JS हो गया, CSS हो गया, mostly all those things
जो हर दिन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। दीज आर स्टैटिक कंटेंट, एक बार HTML बनाया ऐसा नहीं है ना, कल भी जाके चेंज कर दोगे। इमेजेस जो वेबसाइट्स वगैरह पे देखते हो या वीडियोस जो वेबसाइट्स पे प्ले होते हैं, ऑल ऑफ देम आर स्टोर्ड इन द CDN। तो जहां यूजर है वो उसके नियरेस्ट CDN से लेकर के आता है। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है, कि अगर क्लाइंट हमारा इंडिया में था, ठीक है, तो इट विल गो एंड टॉक टू द CDN इन द इंडिया, ठीक है। एंड अगर वहां पर उसको डेटा नहीं मिलता है, देन इट विल गो एंड हिट योर मेन सर्वर, वरना वो मेन सर्वर को हिट नहीं करेगा। सो तुमने जो है अगेन क्या किया, ट्रैफिक ऑफलोड कर लिया, कि तुम्हारा मेन सर्वर जो था वहां पे अब और रिक्वेस्ट थोड़ी और कम हो जाएगी। एंड तुमने लेटेंसी भी इंप्रूव कर दी, क्योंकि अब जो यूजर जहां है उसको वहीं से रेस्पॉन्स मिल जा रहा है। सो दिस इज अ रियली गुड थिंग। इट हेल्प्स यू improve reducing the latency and offloading the traffic as well. सो नाउ इन द सिनेरियो, अगर अब मल्टीपल यूजर्स थे, इंडिया में थे, चाइना में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, US में थे, सो व्हाट हैपेंस कि अगर लेट्स से कि इंडिया वाला जो यूजर था, ही ट्राइज टू वॉच दैट नेटफ्लिक्स शो, एंड वो इंडिया के CDN को हिट करता है। बट अगर उसको यहाँ नहीं मिला, तब क्या करेगा वो, जा करके क्या इस मेन सर्वर को हिट करेगा? सो नहीं। सो व्हाट दे CDNs अलाउ इज कि तुम पहले जाके अपने पड़ोसी CDN से एक बार पूछ लो कि नियरेस्ट CDN जो भी है, क्या उसके पास है क्या ये चीज, उसके पास क्या मनी है इसकी सीरीज पड़ी है? अगर पड़ी है तो जा करके उससे लेकर के आ जाओ अपने पास। अगर इसके पास भी नहीं है, अगर नियरेस्ट चाइना के पास भी नहीं है, तब तुम भले ही जा सकते हो और ओरिजिनल सर्वर को जा करके हिट करके ले सकते हो, but only if the nearest server also doesn't have, but generally मिल ही जाता है, and it helps you improve the performance, ठीक है। so now these are the things। अब सिर्फ यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्केल कर दिया, हमने CDNs भी इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने कैश भी डाल दिया, हमारा परफॉर्मेंस भी अब इंप्रूव हो चुका है। लेकिन अब देयर आर few more things जो हमको समझना चाहिए। वन ऑफ द थिंग इज मैसेजिंग क्यूज। मैसेजिंग क्यूज क्या करते हैं हेल्प में? जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इतना बड़ा सिस्टम बना दिया, अब उसको मॉनिटर भी तो करोगे कि व्हाट आर द लॉग्स, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, क्या आ रहे हैं, कुछ अगर अलर्ट्स आ गया, ठीक है, वो सब। या प्रोबेबली यू माइट हैव हर्ड अबाउट कि नोटिफिकेशन, अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हो, देन उसके 2-3 मिनट बाद यू सी एक मेल आ जाता है कि अच्छा योर ऑर्डर कंफर्मेशन इज डन, ठीक है, पेमेंट हो जाता है। इट्स नॉट दैट कि तुमको ब्लॉक रखता है तुम्हारे स्क्रीन पे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता यू आर नॉट अलाउड टू यूज Amazon, है ना। बट यू विल सी कि हाँ, जो नोटिफिकेशन ईमेल आता है वो 1 मिनट 2 मिनट के बाद आता है आराम से। सो व्हाट इट हेल्प्स इज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस क्या होता है कि ये हुआ, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। एसिंक्रोनस ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अलग अलग, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। इसके लिए जनरली वी गो एंड यूज द मैसेजिंग क्यूज। अब यहाँ पर क्या होता है, यू हैव अ प्रोड्यूसर, यू हैव द मैसेज विच प्रोड्यूसेस और विच सेंड्स मैसेजेस टू दिस पर्टिकुलर क्यू जो मिडिलमैन है, एंड देन एट द एंड पे कंज्यूमर्स होते हैं जो इस मैसेज से यहाँ से कंज्यूम करते हैं, ये वर्कर नोड्स होते हैं, और ये यहाँ से रीड करते हैं मैसेजेस, एंड इसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज रिक्वायर्ड होता है उस चीज को वो सर्व करते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि जो भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ना, उन सबको ऑफलोड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इमेज अगर तुम कहीं अपलोड करते हो, तो इमेज प्रोसेस होता है डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में। मान लो तुमको 40 पिक्सल का चाहिए, 80 पिक्सल का चाहिए, 200 पिक्सल का चाहिए, डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या कंफर्मेशन ईमेल जैसे आई सेड इन केस ऑफ Amazon, तो होगा, वो प्रोसेस होगा, एंड देन एक अलर्ट आएगा। ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर पैरेलल कर सकते हैं एसिंक्रोनस नेचर में। उस पे टाइम लगेगा जब तक वो प्रोसेस होके एक अलर्ट आए। सो व्हाई वी वांट आवर यूजर की वो स्क्रीन पर हैंग अप ही रहे तब तक के लिए। सो दैट्स व्हाई वी विल पुट इट ऑल ऑफ दीज टास्क इन अ मैसेजिंग क्यू। और अगर किसी कारण से मान लो वो फेल हो जाता है, ठीक है, तुम्हारा कंज्यूमर जो है व्हेन इट वाज ट्राइंग टू रीड इट वो फेल हो गया, तो उस केस में यू मीन कि वो मैसेज जो है वो चला जाएगा, वो दैट इज लॉस्ट? सो नो, इट इज नॉट लॉस्ट। यहाँ पर वो फिर से रीट्राई मैकेनिज्म होता है। सो क्यू विल ट्राई टू अगेन डू अ रीट्राई, ठीक है। अगर फिर भी फेल हो गया, फिर वापस रीट्राई होगा, एंड इट इज कॉन्फ़िगरेबल। और अगर 3-4 बार के बाद भी, मतलब प्रोबेबली द थ्रेशोल्ड हैज रीच्ड,
तो वो उसको एक डेड क्यू में डाल देता है, एंड फ्रॉम देयर देन यू कैन प्रोसेस इट सम टाइम लेटर. So this is on a very high level how the messaging queue works. These are the message patterns which we'll skip for now. It's not needed. And then the last part, we are here. कि चलो अब हमने सारी चीजें कर दी, हमने मैसेजिंग क्यूज भी लगा दिया, हमने स्केल भी कर दिया, कैशिंग भी कर दी, एवरीथिंग. बट अभी हमारा सारा का सारा कुछ इंडिया में था. हमारा एक डेटा सेंटर था, वहां पे हमारे ऐप सर्वर्स, क्यूज, एवरीथिंग वाज देयर इन दिस डेटाबेस. सब कुछ था इंडिया में, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस कि कुछ हो गया इंडिया में, ठीक है, ये वाले लोकेशन पे जहां तुम्हारा ये पूरा डेटा सेंटर था वहां आग लग गई, या भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग कैन हैपन. तो ये सब कुछ तो चला जाएगा. अब हाउ विल यू सर्व योर क्लाइंट्स, वो तो ऑल अक्रॉस द ग्लोब थे. सो व्हाट इट इज डन इज कि हम डेटा सेंटर्स एक्सपैंड कर देते हैं. तो जापान में एक डेटा सेंटर है, इंडिया में एक डेटा सेंटर है, ठीक है. प्रोबेबली यू हैव डेटा सेंटर इन सम एवरी कंट्री में तुम डाल सकते हो 3-4 जगह पे. सो दैट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रेप्लिकेटेड. ये भी एक दूसरे के अंदर, जो डेटाबेस में यहाँ रहेगा वो डेटाबेस में यहाँ भी रहेगा. सो इवन इन केस कि जापान में हरिकेन आ जाता है, इंडिया में अर्थक्वेक आ जाता है, एनीथिंग हैपेंस, your entire application is still able to serve the clients. अब इसका क्या फायदा हुआ? एक तो ज्योग्राफिक स्केलेबिलिटी, ठीक है, कि तुमने ऑल क्रॉस द ग्लोब तुम सर्व कर पाओगे. मतलब अगर कोई जापान का यूजर है, उसका रिक्वेस्ट इंडिया तक आएगा ही नहीं, वो जापान में ही सर्व हो जाएगा. फिर तुमने डिजास्टर रिकवरी बढ़ा ली कि अगर एक पूरा डेटा सेंटर क्रैश भी हो जाता है, स्टिल द रिक्वेस्ट विल बी सर्व्ड फ्रॉम द अदर वन. एंड डेफिनेटली लेटेंसी तो तुमने इंप्रूव करी ही है. So this is the last part here. This is the entire way जहां पर अभी if you will see, तो तुम्हारे पास चाहे एक यूजर हो या 1000 यूजर हो या 1 million यूजर हो, all of your requests will be still served. And any situation, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा रिक्वेस्ट अच्छे तरीके से सर्व होगा. इट विल, द रेस्पॉन्स विल बी फास्ट बिकॉज यू हैव इंट्रोड्यूस्ड कैश, यू यू हैव रेप्लिकेटेड योर डेटाबेस. तुमने स्केल कर रखा है कि अगर एक डेटाबेस क्रैश भी हो जाए, देन ऑल्सो योर रिक्वेस्ट विल बी सर्व्ड बाय द क्लाइंट्स. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी स्केल आवर सिस्टम from 0 to million. That is all about this particular session. I hope you guys learned something or the other. Yeah, Dipanjan. So you can take up now. If anyone has any questions, you can unmute yourself and you can ask these questions. अगर किसी को कुछ भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Sir, how to start the career? How to start the career in what? किस field में you want to start your career? System designing. So system design is not something which you start as a career. So when you start working in a company, ठीक है, चाहे you start working in any of the company or startup, you will understand कि वहाँ पे अलग अलग components हैं, ठीक है. You have different component, probably एक service है और multiple services है, and then you start to see कि अच्छा एक सर्विस दूसरे से कैसे बात करती है. what happens कि तुम कैसे scale करते हो, probably you will use some cloud providers, AWS and everything, ठीक है. So that's how your journey begins. सबसे पहले तो you don't get to learn ये सारा theoretical चीज ऐसे, it comes gradually to you as you age in the industry. But हाँ, if you want to change your question and say कि कैसे, how can I learn these things, then I can suggest you a couple of resources जहाँ से you can at least start to learn these things. There are many different books which you can follow. One of the book to get started with is Web Scalability for Startup Engineers. So you can refer that book. As of now on YouTube as well, if you will do a general search, okay, on the different topics which I have explained, so you will get very a lot of videos. You can read a lot of articles on Medium blogs, okay. Then there are many different newsletters that you can subscribe to. So that is how you understand the system design. I hope that answers your question.
Manish, there's one more question from Rahul. He says, how can we get SD job role as a fresher and what topics to prepare and how to target companies? Okay. How do we prepare for SD jobs in general, you're saying? So, Rahul is his name, right? Yeah, that's correct. So Rahul, to get in a job of a software engineer, it's a very standard roadmap. Okay, so the first thing that is expected from you is you should be good with the coding. Okay, you should understand and comfortable with any one programming language. Either it could be Python or Java or JavaScript, Golang, any such language. Then the second thing is you have to be good with the fundamentals. You should understand the fundamentals of programming. You should know the syntaxes. Then the third thing is you should have the problem solving attitude. So you should be in a state where you are given a problem, you can come up with a solution. So how to begin that is start with solving some problems of the basics like data structures algorithm problem. Get acquainted with the different topics that are out there of different data structures, the popular algorithms. Learn that. Once you are done with that, then try your hands by on building something. Okay, so the best learning will happen when you build some actual projects. So at least get started by writing some code. Try to build some app. Either it could be a very basic one. Try to do you can watch a lot of YouTube tutorials are there as of now, so you can follow any playlist. Try to build something and learn, but don't stop there. Once you have copied some code from other playlists and you have built that, now try to do something on top of it, or try to build a couple of more projects, okay, which you have done from scratch. In this journey you will come across many errors, many mistakes you will do. Okay, you will try to understand and read the error messages, try to debug it, and that's how you start learning this entire field. Then once you have this, now your entire portfolio will also be built. Now you have something to write in your resume ki, acha, you have built these 2 3 projects, and that you can showcase. Now you can talk about these projects which you have built in your resume. Okay, now start applying. Connect with people on LinkedIn, connect with the recruiters. Okay, you can build your profile on different job portals and then start applying for interviews. And probably once you have a good portfolio, people will reach out to you, recruiters will reach out to you, they will schedule an interview, and then you will go through the entire 3 or 4 rounds of the interview process that is there for that particular company. And that's how you will have a good starting point in the software engineering industry. I hope that answers your question. Okay. Is there any other question? I think we will have time for maybe one more question. If anyone has any other doubts, anything that they want to ask. Hi, Manish. Hey, Yeah, hi hi. Hello. Gunjan. Yeah. Right now, I'm applying for some company, but as a fresher. But right now, company are demanding for one or at least 1 or 2 year experience. How can I compete with that if I'm just a So fresher? you are just a fresher, and when you are applying, the companies are looking for 1 or 2 years of experience, you are saying. Yeah, Okay, yes. so see, that Tech is stack is one. always see, tech stack it does not uh, will not influence a lot at your level because you are just a fresher, Gunjan. So this is a kind of a, a problem that you will face not only as of now as a fresher, even when you will be there, with the 2 years of experience. Then you will be complaining ki, hey, I am now 2 years of experience, and the companies are now hiring for 3 or more years of experience, so what should I do now? And that this story continues, every time. But for freshers as of now, this is something which you guys will face. But hey, see, the anything won't change in this scenario as well. Whatever I have told earlier in my previous answer, the step-by-step process will be the same. But the fight for you, because you will have to showcase your skill set that you are at that position
where you can compete with someone who have a 1 year experience. To be honest, a 0 year experience and a 1 year experience guy, there is not much to differentiate. The only thing is that the 0 year experience guy just had experience of an intern or has worked with some personal projects, and 1 year guy experience has contributed a little bit in one of the applications that is in the production. बट इतना मेजर कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ जाता है. 1 ईयर एक्सपीरियंस गाय को भी एक फ्रेशर के नजर से ही देखा जाता है, उसको भी एज सच बहुत कुछ फोड़ू काम नहीं मिल जाता है काम करने में कंपनीज में. ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि कौन कितना अच्छे तरीके से शोकेस करता है. इफ देयर इज सम इंजीनियर जो दिखा रहा है कि हाँ आई एम एबल टू टेक मोर टास्क, ओनरशिप दिखा रहा है, देन ही गेट्स इट. फॉर योर सिनेरियो आई विल सजेस्ट कि कॉल्स नहीं आ रहे हैं, अगेन work on the same path. Mern stack में कर रहे हो, build more projects, build good projects, I would say. अगर Mern stack कर लिया है, ठीक है, you know the basics and everything. Now don't just go and watch the playlist, YouTube playlist, and again you are building the same clone apps and everything. Try to start building something जो कि you do it from scratch, everything. ठीक है, probably you look at some website or you want to build any application जिसमें you feel कि अच्छा this is not that good, I hope कि इसके अंदर ये feature भी supported होता, and you build that particular feature and add that thing in your resume. उससे you will get that extra attention कि अच्छा गुंजन ने सिर्फ ये यहाँ तक ही छोड़ नहीं दिया बल्कि इसके ऊपर भी एक लेयर कुछ और काम किया, इस पे ये build कर दिया. Okay, that gives you the exposure, and when you share these things, okay, you can also try to share all of these things what you are building, kuch naya banaya, in on LinkedIn or on Twitter, and then folks will recognize कि अच्छा हाँ Gunjan is doing something this, he is a good candidate kisko we can interview, and that will give you a leverage कि चलो you have something to showcase. ठीक है, even in the tough market condition. And then when you reach to the recruiters, or when at this point of time when you reach to the different CTOs of startups या CEOs of the startup कि देखो मैंने ये बनाया है, probably if you can just have a look, and you can try cold emailing to multiple folks and try to get an interview, वहां पे you will have more weightage. Okay, so don't get into that कि 0 years experience है तो I'll not be able to get a job क्योंकि 1 year experience वालों को मिल रहा है. If you ask the same question with 1 year experience guy, वो भी यही रोना करेंगे कि मुझे नहीं आ रहा है, 2 year experience वालों को आ रहा है. So yeah, that And is the yeah, answer. thank you for that, and thank you for the system design. Okay, I just wanted to know one thing. You have talked about messaging and queue. So, Mhm. any suggestion regarding any documentation or something like that? Because I want to know more. So you can definitely read. So see, if you want to start something from very scratch, ठीक है, so I'll not say कि go ahead directly with the messaging queues. ठीक है, try to understand the overall system design as a whole. उसके लिए one of the book I suggested is Web Scalability for Startup Engineers. It's a really good book for a beginner to start with. ठीक है, तो वो follow कर सकते हो. Once you are comfortable with the terms, the terminologies and everything, then you can go ahead with the different set of just messaging queues जाना है. So there are different books as well. There is a complete book of O'Reilly. O'Reilly is the subscription, is the publisher, where you can get a really good technical books. तो वहां से जाके पढ़ सकते हो. अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली गो टू यूट्यूब. यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे प्लेलिस्ट्स वगैरह वेयर यू कैन रीड अबाउट दिस. द अदर साइड कुड बी यू कैन गो टू द डिफरेंट blogs, medium blogs पे. If you just do a Google search of messaging queues, either it is Kafka or RabbitMQ or anything, you will get it over there. ठीक है, I have explicitly not took names of any of the कि काफका बोल देते हैं या रैबिट एम क्यू बोल देते हैं, बिकॉज दैट विल कंफ्यूज यू गाइस. ठीक है, सो दैट्स आई हैव नॉट टुक नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक टूल. ठीक है, बट हाँ ओवरऑल पहले चीजों को समझो कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग एट अ स्केल, क्या क्या टर्म्स होते हैं, टेक होता है, एंड देन गो इनटू वन पर्टिकुलर थिंग. Okay, thank you, Manish. Yeah, that's okay, Gunjan. Okay, I think the remaining questions are also regarding suggestions only for resources, but I think you've answered those already. So
we'll move towards the conclusion bit. If you have any parting words for them, we can go ahead. Otherwise, I can conclude the session. Yeah, so so guys, I would just say कि I know the system design and all of the things will be kind of scary शुरू में when you are starting up कि बहुत complicated है how to get started with it and how to progress on this journey, but trust me, as a fresher everybody goes with this entire notion ठीक है कि मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, but as you age in the industry, as you grow as a software engineer, you will get familiar with all of these terms and technologies, and with again 5-6 years of experience ये सारी चीजें will look like अच्छा हाँ I know all of those things. So just be patient, and the only one thing I'll advise you guys is to try to read something or study something every day, irrespective of what work you are doing. Try to do something or read one article a day. That will help you be better and understand all of these tech terms. So that's all the best for your interviews and everything. Yeah. All right. Thank you so much, Manish, for this wonderful session. I really hope people who came in were able to find some value here and learn about this concept. I understand this might not have been something new for a lot of people, but we have really covered this session from the basic level. So even if this was a new concept to you, I hope you were able to understand what we were trying to do here. We'll keep having sessions like these in the future as well. Just dropping a quick reminder before we end the call that I've shared a feedback form on chat. So please ensure that you fill it out so that we can invite you for future sessions and also understand what topics you'd want us to cover. I've also shared the link to our website. So people who have been asking for the recording and also the PPT, you can check the recording of this session from the website. It'll be uploaded there. You can also check the previous sessions that has happened and check the recordings of those sessions as well, in addition to signing up for the sessions that we have planned in the next few days in the month of June. With that, I think a huge thank you to everyone for attending this session, making this a successful one. And really hope to see you in the next session as well. Thank you so much. Have a lovely night, everyone. Yeah. Thanks. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.